वन लाइनर्स। 1. तोमर वंश ने कौन से सिक्के जारी किए और वे किस क्षेत्र को नियंत्रित करते थे? Which coins did the Tomar dynasty mint and which region did they control? Answer. Delival coins controlled the Mewar area region. 2. सिसोदिया वंश ने मेवाड़ पर कब शासन किया और चित्तौड़गढ़ किसने पुनः प्राप्त किया? When did the Sisodia dynasty rule Mewar and who recaptured Chittorgarh? Answer. 15th century. Rana Hamir Singh recaptured Chittorgarh in 1326 AD. 3. कांगड़ा किला कहाँ स्थित है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है और इसे किसने बनवाया? Where is Kangra fort located? What is it famous for and who built it? Answer. Himachal Pradesh at the confluence of Bansganga and Manjhi rivers, largest fort in the Himalayas, built by King Susharma Chandra of the Katoch dynasty. 4. पुराना किला दिल्ली किसने शुरू किया और किसने इसे पूरा किया? Who started the Purana Killa Old Fort in Delhi and who completed it? Answer. Started by Humayun in 1533, rebuilt, expanded by Sher Shah Suri with sandstone and marble. 5. शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किन 2 युद्धों में हराया? In which 2 battles did शेर शाह सूरी defeat हुमायूं? Answer. Battle of Chauser and Battle of Kannauj. 6. 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन सा था और किन किन वंशों ने इस पर शासन किया? Which was the most powerful among the 16 Mahajanapadas and which dynasties ruled it? Answer. Magadha, ruled successively by Haryanka, Shishunaga, Nanda, Maurya, and Shunga dynasties. 7. कुषाण वंश की स्थापना किसने की और इसकी पहली और दूसरी राजधानी कहाँ थी? Who founded the Kushan dynasty and what were its first and second capitals? Answer. Founded by Kujula Cadphises, first capital Peshawar, second capital Mathura. 8. 4 बौद्ध परिषदों का आयोजन कहाँ कहाँ हुआ? Where were the 4 Buddhist councils held? Answer. First Rajgriha Bihar, second Vaishali Bihar, third Pataliputra Patna under Ashoka, fourth Kashmir under Kanishka. 9. दीदारगंज यक्षिणी क्या है और यह किस साम्राज्य से संबंधित है? What is the Didarganj Yakshini and which empire does it belong to? Answer. A life-size standing stone image of a Yakshini holding a fly whisk, belongs to the Mauryan Empire. 10. गुप्त साम्राज्य में भोग क्या था? What was bhog in the Gupta Empire? Answer. A portion of total production set aside for the King Gupta administrative term. 11. बाजीराव प्रथम को किस उपनाम से जाना जाता है और वे मराठा साम्राज्य में क्या थे? By what nickname is Bajirao known and what was he in the Maratha Empire? Answer. Called Napoleon of India, also Thorle Bajirao or Bajirao Ballal, he was the 7th Peshwa, chief minister of the Maratha Empire. 12. पेशवा का अर्थ क्या है? What does the title Peshwa mean? Answer. Chief Minister or Prime Minister, the highest administrative official. 13. विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? Who founded the Vijayanagara Empire? Answer. हरिहर रे एंड बुक्का-रे. 14. महासंधि विग्रहिक गुप्त साम्राज्य में क्या था? What was महासंधि विग्रहिक in the Gupta Empire? Answer. A government position responsible for foreign relations and peace with other kingdoms, essentially a foreign minister. 15. अष्टविंशति स्थापत्य शैली क्या है और इसका उदाहरण कहाँ मिलता है? What is the Ashtavimsati architectural style and where is an example found? Answer. An octagonal building layout with a central main structure surrounded by 8 additional structures. Akbar's tomb in Sikandra exemplifies this Mughal style. 16. रानी गैडिनल्यू कौन थी और उन्हें कौन सी उपाधि मिली? Who was Rani Gadinliu and what title was she given? Answer. A Naga spiritual and political leader from the Rongme Naga tribe. Jawaharlal Nehru gave her the title, Daughter of the Hills and Queen, in 1937. 17. रानी गैडिनल्यू का जन्म कब हुआ? वे किस आंदोलन में शामिल हुई और कब तक जेल में रहीं? When was Rani Gadinliu born? Which movement did she join and how long was she imprisoned? Answer. Born January 26, 1915, joined Herika movement at age 13, arrested at 16 in 1932, remained imprisoned until independence in 1947, died 1993. 18. स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार के प्रमुख उद्देश्य क्या थे?
What were the major objectives of land reforms after independence? Answer: abolishing intermediaries, zamindars, reforming tenancy laws, and setting land holding limits. 19. भूदान आंदोलन किसने चलाया और इसका उद्देश्य क्या था? Who led the Bhudan movement and what was its objective? Answer: Vinoba Bhave encouraged wealthy landowners to gift land to the landless. 20. लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलोई ने विभाजन के समय किसका विरोध किया? What did Lokpriya Gopinath Bordoloi oppose during the partition? Answer: he opposed merging Assam with Bengal, fearing it would force Assam into East Pakistan, advocated for keeping Assam as an individual region within India. 21. 1773 के विनियमन अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट ने कौन कौन से 4 प्रमुख बदलाव किए? What were the 4 major changes introduced by the Regulating Act of 1773? Answer: parliamentary oversight of East India Company, mandatory reporting system to British government, centralized authority making Bengal governor into Governor General with 4-member executive council, Bombay and Madras presidencies now reporting to the Governor General. 22. Ring fence policy किसने बनाई और इसे किस नीति ने बदला? Who created the ring fence policy and which policy replaced it? Answer: created by Warren Hastings to create a buffer zone around British territories, replaced by subsidiary alliance system introduced by Wellesley. 23. ठक्कर बापा का वास्तविक नाम क्या था और उन्होंने किसके लिए कार्य किया? What was Thakkar Bapa's real name and for whom did he work? Answer: Amritlal Vithaldas Thakkar 1869-1951, worked for tribal and Dalit community uplift. Mahatma Gandhi granted him the title बापा. 24. यजुर्वेद में क्या है और इसे ऋग्वेद तथा सामवेद से कैसे अलग किया जाता है? What does the Yajurveda contain and how is it differentiated from Rigveda and Samaveda? Answer: Yajurveda rituals and ceremonial procedures, Rigveda hymns, Samaveda melodies. 25. चीन ने कॉन्डोम और गर्भनिरोधक दवाओं पर कितना कर लगाया और क्यों? What tax did China impose on condoms and contraceptive drugs and why? Answer: 13% tax, to increase its population growth. 26. भारत की डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का विस्तार किस क्षेत्र में किया गया? To which sector was India's design linked incentive scheme expanded? Answer: Semiconductors. 27. भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 कब लॉन्च किया गया? When was the Indian Semiconductor Mission 2.0 launched? Answer: in the 2024-25 budget. 28. पाकिस्तान ने किस मिसाइल का परीक्षण किया और यह कैसे लॉन्च होती है? Which missile did Pakistan test fire and how is it launched? Answer: Tamur Air Launch Cruise Missile, launched from aircraft. 29. इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 में किस राज्य की पुलिस ने पहला स्थान प्राप्त किया? Which state's police ranked first in the interoperable criminal justice system 2.0? Answer: Uttarakhand Police according to NCRB data. 30. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक किस लिए प्रसिद्ध हुआ? What is Tripura Grameen Bank famous for? Answer: became India's first rural bank to introduce a solar-powered ATM van providing banking services in remote areas. 31. ओडिशा की अमा पदाबिबा अमा भाषारे योजना का उद्देश्य क्या है? What is the objective of Odisha's Amma Padabiba Amma Bhasare scheme? Answer: to provide early education to children aged 3-6 years in their mother tongue. 32. Stripes मोबाइल एप्लीकेशन किसके लिए उपयोग किया जाता है और कहाँ? For what purpose is the Stripes mobile application used and where? Answer: used by forest staff for tiger census in the Annamalai Tiger Reserve. 33. हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मौर्य और शुंग वंशों का क्रम किस महाजनपद से संबंधित है? Which Mahajanapada is associated with the sequence of Haryanka, Shishunaga, Nanda, Maurya, and Shunga dynasties? Answer: Magadha. 34. गुप्त साम्राज्य में भूमि लैंड रेवेन्यू का प्रशासन किस प्रकार होता था? How was land revenue administered in the Gupta Empire? Answer: through the bhog system where a portion of total production was set aside for the king. 35. अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? Where is Akbar's tomb located?
आंसर सिकंदरा नियर आगरा। 36. रानी गैडिनलियू के चचेरे भाई का नाम क्या था और उनकी मृत्यु कब हुई? What was the name of Rani Gadinliu's cousin and when did he die? Answer Hypo Jadonang, died in 1931. 37. 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले बंगाल के गवर्नर का पद किसमें बदला? What did the position of Governor of Bengal change to under the Regulating Act of 1773? Answer Governor General with a 4-member Executive Council. 38. विनोबा भावे को किस उपनाम से जाना जाता है? By what nickname is Vinoba Bhave known? Answer First सत्याग्रही। 39. महासंधि विग्रहिक और भोग किस साम्राज्य के प्रशासनिक शब्द हैं? महासंधि विग्रहिक and भोग are administrative terms of which empire? Answer गुप्ता empire। 40. पेशवा की भूमिका क्या थी और बाजीराव प्रथम कौन से पेशवा थे? What was the role of a पेशवा in which पेशवा was बाजीराव I? Answer Peshwa was the chief minister or prime minister, highest administrative official of the Maratha Empire. Bajirao I was the 7th Peshwa. The 5th of August 2026 current affair. 1. 2026 में महिला एकल का खिताब जीतकर ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे कम उम्र की विजेता तन्वी शर्मा बनी। Tanvi Sharma became the youngest winner in the history of the Taipei Open Badminton Tournament by winning the women's singles title in 2026. 2. 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर चौथा स्थान प्राप्त किया। India finished 4th at the 2026 Commonwealth Games with 39 medals, 13 gold, 17 silver and 9 bronze. 3. ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाजी दल ने कुल 7 स्वर्ण पदक जीते। The Indian boxing contingent won a total of 7 gold medals at the Glasgow 2026 Commonwealth Games. 4. मीराबाई चानू 3 लगातार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी। मीराबाई चानू became the first Indian weightlifter to win gold medals at 3 consecutive Commonwealth Games. 5. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। The nationwide नशा मुक्त युवा for विकसित भारत संकल्प अभियान launched by Prime Minister Narendra Modi will run for 100 weeks. 6. 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में अंकुर भट्टाचार्जी और यशस्विनी घोरपड़े ने क्रमशः पुरुष एवं महिला एकल खिताब जीते। Ankur Bhattacharjee and Yashaswini Ghorpade won the men's and women's singles titles respectively at the 22nd Commonwealth Table Tennis Championship 2026. 7. हिरोशिमा परमाणु विस्फोट से बने कांच के मोतियों में हाल ही में हिरोशिमाइट नामक नई मिश्र धातु की खोज की गई। A new alloy named Hiroshimite was recently discovered in glass beads formed by the Hiroshima atomic explosion. 8. बिहार के रवि कुमार ने अंग्रेजी वर्णमाला को 9.15 सेकंड में लिखकर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नया रिकॉर्ड बनाया। रवि कुमार फ्रॉम बिहार set an international book of records record by writing the English alphabet in just 9.15 seconds. 9. 6000 से अधिक गीत गाने वाली वरिष्ठ दक्षिण भारतीय पार्श्व गायिका के जमुना रानी का हाल ही में निधन हो गया। वेटरन साउथ इंडियन प्लेबैक सिंगर के जमुना रानी, who sung over 6,000 songs, passed away recently. 10. आंध्र प्रदेश ऑस्ट्रेलिया समझौता ज्ञापनों के तहत आईआईटी तिरुपति में सौर विनिर्माण उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। A Center of Excellence for Solar Manufacturing has been proposed at IIT Tirupati under the Andhra Pradesh Australia MoUs. 11. वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत का अहमदाबाद शहर करेगा। अहमदाबाद will host the 2030 Commonwealth Games. 12. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। President Draupadi Murmu unveiled the statue of Utkalmani Pandit Gopabandhu Das in New Delhi. 13. ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों (NSO) के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन लखनऊ में किया गया।
A two-day meeting of the heads of National Statistical Offices (NSOS) of BRICS countries was held in Lucknow. 14. वस्त्र मंत्रालय द्वारा घी और बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा. The Ministry of Textiles will organize the Ghee or Beyond 2.0 summit in New Delhi. 15. कॉमनवेल्थ शांति मध्यस्थता सम्मेलन 2026 का आयोजन जयपुर में किया गया. The Commonwealth Peace Mediation Conference 2026 was held in Jaipur. Previous question answer. The Ministry of Textiles is hosting the Ghee or Beyond 2.0 summit on August 5, 2026. Which of the following is being launched at the summit? Answer B. Digital Handloom Atlas. The Ministry of Textiles is hosting the Ghee or Beyond 2.0 summit on August 5, 2026 to promote India's ghee-tagged products. Key highlights include the launch of the Digital Handloom Atlas and the Handloom Expat Promotion Council's Diamond Jubilee logo. The summit showcases 100 products to buyers from 10 nations and uses AI to strengthen the ghee trade ecosystem. Question of day. Which Indian startup developed the POWERBANK-50, India's first satellite battery to achieve flight heritage status? A. Agnikul Cosmos. B. Bellatrix Aerospace. C. Takim 2 Space. D. Pixel. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affairs and GKGS.